अब आपने कई बार जिम में लोगों को रिवर्स पेक डेक फ्लाई मारते समय ये आपने फॉर्म देखा होगा, ओके। अब ये बहुत ही गलत फॉर्म है, प्लीज समझ लीजिए कि ये एक्सरसाइज जो है वो पोस्टीरियर डेल्टॉइड के लिए, पोस्टीरियर डेल्टॉइड यहाँ पर होती है, ओके। अब इसको सही तरीके से आप कैसे करोगे, इसका जरा ख्याल रखिए। फॉर्म और टेक्निक क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये सीट के ऊपर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बॉडी को स्टेबल रखना है। तो उसके लिए आपके बॉडी की पोजीशन जो है वो आप कैसे रखोगे, आपका एल्बो का जो एंगल है वो कैसे रखोगे, ये आपको जरा देखना बहुत ज़रूरी है। Now, first of all, my body should be stable, so I don't require this seat actually. Okay, if you are making use of the seat, it's okay, but still it is not needed. Okay, it is not a requirement because your body can be stable. So, इसको मैंने नीचे कर दिया, मैं ऐसे खड़ा हूँ। अब मेरे पैरों की पोजीशन देखिए कैसे, ये मेरे पैरों की पोजीशन है। दिस इज द पोजीशन ऑफ माय लेग्स, ओके, जहाँ पर मेरी बॉडी स्टेबल है, माय बॉडी इज क्वाइट स्टेबल, ओके। दूसरी चीज, माय चेस्ट इज वेल सपोर्टेड, करेक्ट। नाउ व्हेन आई होल्ड द हैंडल्स, तो यहाँ पर मुझे ये देखना है कि अगर ये यहाँ पर मेरा एल्बो लॉक है, ओके, इट शुड बी स्लाइटली शाई ऑफ लॉकआउट। शाई ऑफ लॉकआउट मतलब ये, दिस, आई एम अगेन शोइंग दिस टू यू। इफ दिस इज लॉक, then you don't have to keep it like this, shy of lock, this is shy of lock, okay। तो ये आपको देखना है थोड़ा सा, मतलब ये अगर पूरी तरीके से लॉक है तो मेरे को उसको ऐसे रखना है थोड़ा सा, ओके। क्यों ऐसे रखना है? ताकि मेरे एल्बो के ऊपर पूरा स्ट्रेस ना आए, क्लियर। उसके बाद आपको ये देखना है कि योर रिस्ट, योर एल्बो एंड द शोल्डर हैज टू बी इन वन लाइन। अब ये ऐसे मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू कीप द एल्बोस अप। एल्बो की प्लेसमेंट आपको ऊपर रखनी पड़ेगी, ओके। एल्बो की प्लेसमेंट ऊपर रखोगे तो और एक फायदा होगा, आपकी जो मूवमेंट है वो मसल फाइबर डायरेक्शन में होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मसल फाइबर डायरेक्शन क्या है, दैट आई विल टेल यू। सो बेसिकली दिस इज द पोजीशन, यू विल ब्रीथ हियर, रेंज ऑफ मोशन भी यहाँ तक, यहाँ से जबरदस्ती पीछे मत लेके जाइए, आपके शोल्डर के ऊपर स्ट्रेन आएगा, ओके। तो ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं। अभी यहाँ पर मसल फाइबर डायरेक्शन देख लीजिए, मूवमेंट कैसे हो रही है, प्लीज। कीप योर स्टैंड स्लाइटली वाइडर, मेक इट स्टेबल। तो पाए जरा तसा नहीं। Okay, now her body is stable, clear? As I said, elbow, now again, this is not shy of lockout. What did I say? This is lockout, slightly shy of lockout. That's it, bas, that's it. So that there is no stress on the elbow, clear? Now, wrist, again should be up. Wrist ऐसे नहीं होनी चाहिए, the wrist should be like this, okay? You see the difference, not this. Muscle fiber direction. We are talking about the posterior deltoid. Posterior deltoid का origin जो है, it is from the spine of scapula. Here, this is the spine of scapula. So the muscle fiber will start from here, correct? Posterior deltoid का, and then it will insert into the deltoid tuberosity. Deltoid tuberosity इधर है, यहाँ पर. So look at the muscle fiber direction. समझ लीजिए ये muscle है. समझ लीजिए this is the skeletal muscle. I am placing the hand here. This is how the muscle fiber direction is. Okay? Origin, insertion. This is how. Okay? तो आप जब मूवमेंट करोगे, the insertion is brought towards the origin, and this is how the muscle contracts. अब आपने अगर एल्बो को नीचे कर दिया, जो आप देखते हो जिम्स में, एल्बो अगर नीचे चला गया, तो मूवमेंट ठीक से नहीं हो रही, फोर्स जनरेशन भी कम होता है. You are not working out properly. So please understand this. So, come on. Again.
Make it lock. Now shy of lock. Slightly shy of lock. That's it. Exhale in it. Start. Come on. 2. Come on. Maintain the wrist. Maintain the wrist. 4. Okay. Now again maintain the wrist. Wrist ऐसे भी नहीं होना चाहिए. This. Maintain the wrist. Come on. Good. Good. Keep the elbow up. Okay, that's it. So this is how the movement of reverse pec deck fly for posterior deltoid. This is how you should do it. Thank you so much.